Hi everyone, welcome back to another video. And in today's video, I'm going to be talking about orbitals, atomic orbitals. Okay, so we have discussed what atomic orbitals are in the last video, and I'm going to be just talking about certain myths about the existence and what are atomic orbitals. Okay, so the existence and the perception of atomic orbitals basically. So ऑर्बिटल्स हम लोग ने कौन कौन सी पढ़ी हैं? ये जो एस there's an s orbital, there's a p orbital, or s p d f are the subshells. Okay, so s p d and f are subshells. S subshell has a single orbital, p has dumbbell 3 orbitals, है ना? Then d subshell has double dumbbell 5 orbitals. Okay, so just give me a second, I just want to draw all 5. And then of course f has complex flower shaped 7 different orbitals. Okay, one orbital can accommodate a total of 2 electrons, so the occupancy of s is 2. For p it is 6, for d it is 10 electrons, and for f it is 14 electrons. Okay, total of these many electrons can stay inside the different spdf subshells. Okay, that is clear to us. So ये जो S है, it is a subshell and it is having in S of course only have a single orbital, so this is the S orbital. P we have different, P is a subshell and we have 3 different orbitals in P, so this is also P orbital, this is also P orbital, this is also P orbital, and all these 3 combine and form a P subshell. And D of course we have 5 different orbitals, and you know the deal. Okay, so अब पहली बात, तो पहला क्वेश्चन तो दिमाग में वो ये आता है कि ये SPDF ही क्यों है? Why not XYZ? Why not ABCD? Why SPDF only? So इसका मतलब, इसका कोई रीज़न है, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट को मन किया और उन्होंने सिर्फ SPDF रख दिया. नो, S मतलब होता है, S is having a full form sharp. Okay, P means principal. Okay, D means diffuse, and F means fundamental. So in terms का मतलब तो समझ में आ गया, but why these terms? What is the meaning of sharp, principal, diffuse, and well, fundamental? Okay, so these terms are the terms which were used in spectroscopy at that time. Okay, for the definition of the spectral lines जो हम पढ़ते हैं ना, उन lines को define करती थी ये lines. कुछ lines sharp होती हैं, कुछ fundamental lines होती हैं. So these words of the orbitals or the naming of the orbitals has come from the naming of the spectral lines. Okay, so that is something you need to make yourself clear कि ये SPDF का meaning है. It's not like XYZ भी हो सकता था या ABCD भी हो सकता था, just scientist को SPDF पसंद आ गया था. It's not like that. Okay, second thing is कि what exactly is an orbital? Is it an actual space? ठीक है, क्या किसी ने कभी orbital को देखा है? So all these are the questions which I'm going to be answering. अगर तुम्हें लगता है कि ऑर्बिटल को तुम बिकॉज वी डोंट हैव वेरी वेरी नाइस माइक्रोस्कोप्स एज ऑफ नाउ, बट अगर आगे जाके वी डेवलप वेरी नाइस माइक्रोस्कोप्स विच कैन ऑफ कोर्स इवन सी एन इलेक्ट्रॉन एंड एवरीथिंग, इवन एट दैट टाइम नो बडी कैन सी ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो ये जो ऑर्बिटल होता है ये कोई देख नहीं सकता क्योंकि ये एक्चुअल फिजिकल स्पेस नहीं है. इट इज़ नॉट एक्चुअली लाइक जैसे हमारा रूम होता है, इट इज़ एक्चुअली फिजिकल स्पेस मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. ओके, दैट्स वेयर वी लिव. तो agreed, we said कि orbital is a space where electron resides or where there is maximum probability of finding the electron, because we cannot talk about the exact existence of electron due to the Heisenberg principle, but we can talk about the probable existence, है ना. So हम लोग बोलते हैं कि orbital is a space where there is a maximum probability of finding the electron around the nucleus, right? So well, there's a dog, so welcome him. All right, so the orbital is a space that electron is going to be in. That's correct, but it is not a physical space. ऐसा कुछ hard तुम orbital को छू के उसको पकड़ के you cannot see कि okay this is circular, so it is maybe or spherical, is orbital. No. Okay, तो अगर हम ये defined, sorry, this is if these are not the defined spaces, then how do we know that s orbital is spherical, p is dumbbell, d is double dumbbell, and how do we know if we have not seen these? ठीक है, so the answer to that is that ये जो orbitals है ना, they are nothing but just the wave functions, and these are just purely mathematical. इनका real existence नहीं है, ये mathematical चीज़ें हैं, and that is all. अब इसका मतलब क्या हुआ? What is the meaning of mathematical existence and the real existence? इसका मतलब क्या हुआ? So as I already mentioned before, ये जो wave function psi होता है ना, this is an orbital.
ये है तुम्हारा ऑर्बिटल, ओके। और हम इसको साई स्क्वायर करते हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन देयर, ओके। एटॉमिक ऑर्बिटल इज नथिंग बट मैथमेटिकल फंक्शन विच इज साई, okay, and this talks about the the behavior and everything of the electron. Now ये जो तुम्हारा s ऑर्बिटल है, ये सर्कुलर और स्फेरिकल क्यों है? क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक स्फेरिकल फॉर्म में आता है। गिविंग एन एग्जाम्पल, लेट्स से एक तुम्हारे पास एक बॉल है एंड यू जस्ट थ्रो द बॉल इन एयर, ठीक है, ऐसे हम थ्रो करते हैं बॉल को। सो द बॉल एक्वायर्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक दिस एंड कुछ टाइम बाद वो नीचे गिर जाती है ग्राउंड पे वापस से, है ना। So this line which I'm drawing right now is a probability distribution of your ball. So at any point of time, the ball can be here, 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 here. Ball cannot be here. Ball cannot be here. Ball cannot be here. Ball पूरे टाइम पे इस पूरी लाइन के बीच में ही कहीं पे होगी, ठीक है। यहाँ 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 कहीं नहीं होगी। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है प्रोबेबल लाइन, वहीं पे बॉल हो सकती है। तो ये जो पूरी की पूरी दिस कर्व लाइन इज, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस बॉल। द बॉल कैन ओनली बी एट दीज डिफरेंट एरियाज एंड नॉट, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा आया था, लाइक दिस, ओके, which meant that the electron is going to be in a spherical region, and that is why we represent the s orbital to be a sphere. It is not actually a hard sphere like a ball जहाँ तुम इलेक्ट्रॉन को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। इट्स जस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इट इज़ जस्ट द, जब साई का हमने वेव प्लॉटिंग करी और मतलब ग्राफ प्लॉटिंग करी तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया एस ऑर्बिटल का, ठीक है। अगर पी की बात करें तो पी का ग्राफ कुछ ऐसा आया, like this and like this, okay. So and that's why we represent it like this, okay. This is the node and these are the two bulbs of your dumbbell shaped p orbital, ठीक है। पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि तुम, दिस इज जस्ट एन एग्जिस्टेंस ऑफ, दिस इज जस्ट टेलिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नोटिस करने वाली बात है कि दिस इज़ अ नोड, मतलब जितनी भी बार हमने उसकी प्लॉटिंग करी तो कभी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं मिला हमें या तो इस एरिया में मिला या इस एरिया में मिला। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसी स्पीशी है जो यहाँ भी है, बीच में नहीं है। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल इफ इलेक्ट्रॉन इज हियर एंड नॉट हियर? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया कैसे होगा, या फिर यहाँ से कुछ किसी पॉइंट पे तो उसको बीच में भी होना चाहिए था, बिकॉज अगर वो यहाँ ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कभी किसी पॉइंट पे तो इट विल बी प्रेजेंट हियर, बट नो, that point where the electron is never found is called the node. इसीलिए हमारे यहाँ पे जैसे s orbital में you can see there is no node, right? p orbital on the other hand is having one node like this. ये बीच में जो point है, this is called the node, which means here there is no probability of finding an electron. Electron कभी इस point पे नहीं होगा, clear? या तो ये वाले एरिया में होगा या ये वाले एरिया में होगा। And of course one orbital can have a total of 2 electrons. तो s orbital में इस गोल रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, और ये जो p ऑर्बिटल है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट। अब ऐसा भी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो एक नीचे ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट, बोथ कैन बी इन आइदर ऑफ द बल्ब, या फिर हो सकता है ऊपर नीचे हो। इट्स नॉट लाइक दैट, किसी ने ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एक अगर ऊपर है तो एक को नीचे होना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। समझना ज़रूरी ये है कि p ऑर्बिटल कोई ऐसे हार्ड स्फीयर, कोई हार्ड डम्बल शेप जगह नहीं है। इट इज़ जस्ट नथिंग बट द प्लॉटिंग ऑफ योर साई, ओके, एंड उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया, एंड दैट इज़ वाई वी रिप्रेजेंट द p ऑर्बिटल टू बी लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली d का ग्राफ कुछ ऐसा आया, राइट, एंड दैट इज़ वाई वी रिप्रेजेंट द d ऑर्बिटल लाइक दिस। इज दैट क्लियर? So we should first know what is exactly an orbital. Is it actually a space which we can touch? Okay, no, it's not like that. It is not exactly a space, but we have to think of it as a space where the energy of the electron is quantized, because we know that the energy is quantized of electron inside an atom. Clear? So this is the real existence of an orbital. And अगर तुम्हें कोई भी doubt है about what exactly an orbital is like, and हाँ, one more thing, you don't have to think of an orbital as always being occupied. It can be a vacant one as well. Since we know hydrogen atom जो है, hydrogen atom is having only one s1, right? Only one electron is there because in hydrogen atom.
बट दैट डज नॉट मीन कि आगे जो 2s है या 2p है, ऑल दीज विल नॉट एग्जिस्ट, दे आर देयर बिकॉज दिस वन इलेक्ट्रॉन माइट नीड टू गेट एक्साइटेड. अगर वो एक्साइट होगा तो कहीं तो जाएगा ना, और कहाँ जा सकता है? क्वांटाइज्ड एरिया में जाएगा कहीं पे. एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट विल नॉट गो एनीवेयर, इट हैज़ टू गो इन अ स्पेस विच इज़ अलाउड वन, है ना. तो ये जो अलाउड स्पेसेस हैं ये ऑर्बिटल्स हैं. सो दिस हैज़ टू गो इन अ सर्टन स्पेस व्हेन इट गेट्स एक्साइटेड. तो वो उस टाइम के लिए इट हैज़ टू गो इन टू अ डिफाइंड रीजन. तो ये सारी ऑर्बिटल्स वहाँ प्रेजेंट हैं, बट क्योंकि वो वेकेंट है, इट इज़ नॉट फिल्ड, सो हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं. बट वंस दे आर फिल्ड, देन ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज ऑर्बिटल्स. बट वो हमेशा हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है. सो इफ समवेयर समवन आस्क्स यू दैट हाउ मेनी ऑर्बिटल्स डज एन हाइड्रोजन एटम हैव, नेवर से only one or the s orbital. No, the orbitals are always infinite. Okay, filled वाली एक है, that is okay. The s orbital is the only one which is filled, but the existence is infinite because excitement के बाद इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है. Clear? So this is the basic theory of what an orbital is, which I wanted to clear before people just go on with this topic. So I hope you understood this video, and thank you so much for watching.